But you kind of add coconut to it, right? Oh, that is at the end. Hmm. Coconut gives the creaminess. बहुत इट्स वेरी स्पाइसी रेसिपी है, बहुत तीखा। हाँ, कोकोनट ऐसा थोड़ा एज दे रहा है, बट क्या बोलते हैं कि तीखा तो लगेगा। जीरा Yes. ब्लैक पेपर Feels like a cooking video. Is a तो क्या cooking वही तो video. है। स्प्लैटर होगा, थोड़ा संभालना। अरे सॉरी, गार्लिक। जिंजर थोड़ा रोस्ट करेंगे, रोस्टेड फॉर अ व्हाइल। Oh, the ginger just hit me. The ginger just hit me. रुक जा, चिलीज भी हिट करें। Time we are talking about Ross omelette. I don't know why I made it, but only thing I recall is back in 2010 2011 होगा, पता नहीं क्या। I don't remember the exact year, but I used to eat out a lot. Especially I love eggs, so बहुत eggs खाते थे। There was a place called उस्ताद मियाँ, विजय सेल्स है ना अभी का, उसके नीचे था बेसमेंट में, और विंटर में me and my friend used to go there. Once I had something called gravy omelette. It was very spicy and I loved it. I loved that thing. And फिर तब का तब ख़त्म हो गया, लाइक देन दे मूड, हमारा जाना भी बंद हो गया एक दिन। द होल चिलीज Why whole though? ब्लेंड ही करना है। अभी इसको चंकी रखा है ना, पांडे के माफिक। Why? तो ब्लेंड ही करना है, चलो। ऐसे बैठे बैठे ही बातें हो रही थी टेबल पे बैठे बैठे के गुड एग्स कहाँ मिलते हैं, अच्छा खाना कहाँ मिलता है। जब ऐसा तीखा सॉस होता है तो तीखा ग्रेवी होता है, देयर इज रोल्स ऑफ ऑमलेट एंड यू गेट ब्रेड्स विद इट, सैलेड और समथिंग लाइक दैट। आई वांटेड टू replicate it as in I wanted to have something to eat it, like most of the dishes which I wanted to eat, that's why I made it. And then if I think that you all will like it, so we put it on the menu. I had a chef with me, we all were vegetarians सब ऐसे एकदम से ऐसे बात किया। He said like I think I can make a good curry out of it। ठीक है, but he is very good, I don't know, he's very good with the skills and all, so he made it and it was not exactly the same, but I sort of liked sort of the sauce he made with the omelette and all. The presentation was on point. पहले आपको पता होगा like there was a gravy, then we put that square sort of an omelette, cheese omelette parcel on top of it and उसके ऊपर seasoning था। So I liked it, and since you know like breads तो बहुत सही बनते हैं, burger breads and all, so we developed the recipe of making a small ladi pav you get with ladi। धीरे धीरे करके जब we started serving that, and it तब जाके people started making videos about Ross omelette. Luckily, we did it at the same time. So Goa का भी it helped. People were noticing what is Ross omelette. Goa में Ross omelette is like you get the chicken gravy and all, but यहाँ पे अब तेल थोड़ा ज़्यादा रखने। तरी जो है ना, तरी we cannot do it, so we have the vegetarian gravy. We started experimenting, we started tasting, then there were a couple of recipes and the chefs started making videos out of it. One day I saw very simple gravy which is like onion forward and black pepper, chilies, this that. I loved it. I thought I need to make this, I have to make the gravy, and I made it. काढ़िया वो आ रहा। It was amazing.
I still see I get पानी आ रहा है मुझे. I love it so much. And वो gravy, I think you all liked it again. Like that is what we are making in this video. So that gravy is what the Ross omelette is today. I'm like, I think the essence of the Ross omelette is that the sauce and the type of omelette you have. अरे बाप रे. नमक भी डाल देता हूँ, सब डाल देता हूँ. Got it. And the breads, of course. Sadly we cannot do poi. Poi is goan bread, so that's what they serve it with. It's more like dry bread. So when you have it with the sauce, it's like what I think it's very close to the rotla we have. There is only one place which does Ross omelette in this city. There's no one that does it better. Thank you. खाना पड़ेगा ना. गरम पानी. Specifically why गरम दो? टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठंडा पानी डालोगे तो वापस चेंज हो जाता है. This helps it cook Sort of. faster. Yeah. एटलीस्ट टेम्परेचर मेंटेन रहता है. तो गर्म पानी डालने का पप्पा कहते हैं, रणवीर ब्रा कहते हैं गर्म पानी नाखो, संजोत कीर कहते हैं गर्म पानी नाखो, આપણે भी નાખો. थोड़ा और. लास्ट स्टेप आता दान मूकी देवाना. अभी ढक्कन लगा के कुक करने का बस. यूट्यूब पर जाओ ना बधु. ओ तो This is done simmering. हाँ ठंडा भी हो गया. दाल जैसे खुशबू आ रही है. अभी ब्लेंड करने का. देखा तरी, देखा ना कैसा है. ब्लेंड करेंगे. Ew. अभी दूसरे की बारी. બધાને મજા આવે ધવલભાઈને ત્યાં. દેખા જો જો છે ને.
जस्ट जितना मॉइस्चर डाला ना वापस वो कुक कर लेंगे 10-15 मिनट ससुराल सिमर का, वही 10-15 मिनट ससुराल सिमर का, देन इट विल बी रेडी. You don't have to go so heavy on the diet jokes. I am getting heavy, so that's my jokes. See, देखा? ए अदरक मिला. Oh no. मेरा एकदम शाइनी. शार्प नज़र है आपका. फ्लेवर रह जाएगा तो देख फ्लेवर तो रहेगा, इम्प्रूव भी होगा. किसी के मुंह में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा. किसी के मुंह में अदरक अच्छा नहीं लगता ना. ये हो गया, रेडी है. रेडी. ओह